Today we are to discuss about the symbolism in no exit, and this is literally very important in perspective of your examinations as well. Modern literature we cannot, he can say, negate the importance of symbolism as well. और यहाँ आज हमने मतलब जो है वो इस प्ले के अंदर नो एग्जिट के अंदर जो है वो सिंबलिज्म ये सिंबॉलिक एलिमेंट्स कौन कौन से हैं आज हम उसको डिस्कस करना है और इंशाल्लाह आज इस कॉन्सेप्ट को हम जो है वो वाइंड अप करेंगे उसके साथ नो एग्जिट भी खत्म हो जाएगा. Symbolism in no exit. The mirror or lack of it is an important symbol in no exit. During her life, Stella kept a mirror with her at all times. In fact, she always felt that she did not exist if she could not see her own reflection. Instead of defining सिंबल है वो herself, मिरर है. तो मिरर जो है वो सिंबॉलिक है और ये तस्वर करती है कि अगर मिरर नहीं होगा तो वो शायद उसको ऐसे लगता है कि जैसे शी इज अनएबल टू एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगी. जी. instead of defining herself as who she was, she defined herself by what she saw. Thinking herself to be lovely, she convinced herself that she was lovely and refined. In truth, she was an evil. वो अपने आप को ये तस्वर करती थी कि she was lovely and refined. In truth, she was an unwell, hypocritical, adulterous, and murderous. In hell, she has no mirror to see herself. She is forced to accept herself as Aeneas and Garson see her. With the absence of mirror, she is finally forced to face the truth. So you can say मिरर की गैर मौजूदगी में वो मुकम्मल तौर पर शी इज फाइनली फोर्स टू फेस द ट्रुथ. उसको जारी सी बात है जो अनीस बताएगी उसको वो एक्सेप्ट करना होगा एंड शी डज सो फॉर. लिहाजा हेल के अंदर जब कोई मिरर नहीं है तो उसको फिर अनीस और गार्सन को मतलब जब वो गार्सन के जरिए अपनी रियलिटी को जो है वो एक्सेप्ट करना होगा. जी. Hell is the most important symbol in the play. For Sartre, the hell that those people create for themselves and from which they refuse to escape is really no different than the hell that they created for themselves on earth. In Sartre's existential thinking, life is hell filled with torture, absurdity, and nothingness. Just as the existence in the Second Empire drawing room is filled with torture, absurdity, and nothingness. तो सार्टर की एग्जिस्टेंशियल थिंकिंग में लाइफ जो है वो हेल है और फिल्ड विद टॉर्चर, अब्सर्डिटी एंड नथिंगनेस. और हमने ये ऑब्जर्व भी किया कि किस तरह से ये तमाम लोग जो हैं वो इस टॉर्चर का सामना करते हैं, किस तरह से मतलब इनकी लाइफ जो है वो हेल के साथ एसोसिएटेड है. In Sartre's existential thinking, life is hell, filled with torture, absurdity, and nothingness. Just as the existence in the Second Empire, drawing room is filled with torture, absurdity, and nothingness. कि जिस तरह से you can say Second Empire drawing room जो है वो बुनियादी तौर पर torture, absurdity और nothingness के साथ associated है. इस तरह से लाइफ भी बिल्कुल जो है वो इसी तरह के साथ associated है. जी. जी. Garson immediately hates the old-fashioned, outdated decor of the room he is shown to. There is no indication of another style he would prefer, and no reason to assume he is that much interested in such questions of taste. Rather, he is thrust into oppressive surroundings as a kind of first torture to his sense of himself. The bronze statue on the mantel symbolizes. इस हवाले से कोई मतलब जो और इंडिकेशन नहीं है. He would prefer and no reason to assume he is that much interested in such questions. कि इस हवाले से कोई और रीजन नहीं है कि वो इन क्वेश्चंस के हवाले से वो इंटरेस्टेड हो. Rather, he is thirst into oppressive surroundings. कि वो मतलब जब वो oppressive surroundings में जो है वो thirst है as a kind of first torture to his sense of himself. The bronze statue on the mantle symbolizes falseness and oppression to the character. कि जो bronze जो statue है वो जो पड़ा हुआ है वहां पे वो falseness और oppression की तरफ इशारा करता है. As a mass-produced replica of genuine piece of art, it's neither unique nor valuable, representing only the less authentic superficial appearance of something else. तो ये मतलब जो है वो उस चीज को मतलब जब वो लेस ऑथेंटिक बता रहा है, सुपरफिशियल अपीयरेंस जो है वो हमारे सामने सिंबलाइज कर रहा है, तो हम लोग ये ऑब्जर्व करते हैं कि किस तरह से ये तमाम चीजें जो है वो वहां पे एंगेज है. तो इट्स heavy and oppressive as is falseness in person's character. So he comes to understand when told he will never need a toothbrush or toilet article, he will exist without a sense of human dignity or the need to care about himself, as in looking in a mirror. But the fixed, immobile,
heavy piece in front of his lidless eyes, that wrongs contraption on the mental piece. There will be times when I stare my eyes out at it as in a nightmare, कि जैसे मतलब जो है वो मेरे लिए ये सब कुछ जो है वो एक नाइटमेयर की तरह है, इस तरह से makes different impression on him. The woman also disliked the statue, but Garson specially finds its strength and solidarity and enforce lesson in his own weakness and helplessness, like statue की जिस तरह से statue helpless है उस तरह से गार्सन भी यहाँ पे हेल्पलेस है. ही इज अनएबल टू मूव. वो मतलब पूरी तरह से एंगेज नहीं हो पाता. एंड एज ही वुड लाइक टू ओपन द डोर एंड लीव हिज हेलिश स्टेट, he would like to remove the statue but cannot even begin to lift it. कि वो चाहता है कि उस स्टेचू को वहां से निकाल दे लेकिन वो उसको उठा नहीं सकता. जी. Dancing represents both an attachment to a previous life and an eternal reminder of misery हम्म. in their damned lives. हाँ, While तो ये Stella is the मतलब one eternal reminder of misery and their damn life. तो attachment to a previous life और the way they dance basically वो reflect करता है कि the way they are dancing वो कैसे मतलब जो वो अपनी miserable life के साथ associated है. While Stella is one who tattles on about her lover, कि जो अपने मतलब जो lover के हवाले से tackle करती है and his abilities as dancer और उसकी dancer के हवाले से जो abilities हैं उस हवाले से. All three characters are in a kind of symbolic dance. तो ये बाकी जो तीनों करेक्टर्स हैं वो एक तरह से सिंबॉलिक डांस के साथ चलते हैं. द सर्कल अराउंड लाइक पार्टनर्स आना, you can say infernal dance floor, where missteps will cause the failure, कि जहाँ पे जो missteps हैं वो क्या करेंगे, will cause the failure to connect as well as reveal the essence, कि जहाँ पे वो कनेक्ट कर सकेंगे एज वेल एज रिवील द सेंस ऑफ फ्यूटिलिटी इन ह्यूमन रिलेशंस, और ये बता सकेंगे कि किस तरह से जो ह्यूमन रिलेशंस की जो फ्यूटिलिटी है वो क्या है. दे कैन शेयर नो काइंडनेस आर टेंडरनेस. वो ना तो मतलब जो है वो ना तो शेयर कर सकते हैं किसी किस्म की काइंडनेस और टेंडरनेस इन देयर एक्सट्रीम आइसोलेशन, अपनी आइसोलेशन में. एंड ईच रिवॉल्व्स अराउंड एंड राउंड इन अ डांस. हर कोई मतलब जो है वो घूमता है, रिवॉल्व्स अराउंड एंड राउंड इन अ डांस, नॉट टू ब्रीथ बिकॉज they already are dead, कि वो सारे के सारे dead हैं. But in a never ending confrontation, तो ये एक ऐसी confrontation है जो कि मतलब जो है वो कभी भी खत्म नहीं होती. Never ending confrontation, confrontation with existence. Stelle longs for the social world. Stelle जो है वो ख्वाहिश करती है social world की for her for you can say snobbish Parisian friends, कि जो उसके Parisian friends हैं उस हवाले से. But her companions are different to the social graces. कि उसके जो companions हैं वो भी मतलब जो है वो different नजर आते हैं उन social graces के हवाले से. तो Stelle tries to follow, you can say, moreover in dancing one person faces another, कि आप जब डांस करते हैं वन पर्सन फेसेस अनदर, वो एक दूसरे को देखता है, तो एज पार्टनर्स लुक एट अदर इन वन अदर आईज, बट दीज कैरेक्टर्स कैन नॉट बियर टू सी देयर रिफ्लेक्टेड सेल्व्स एंड एक्नॉलेज द अदर पर्सन नीड्स, कि वो दूसरे पर्सन की नीड्स को मतलब नहीं कर सकते. तो इनडीड दे आर अननर्व्ड by staring and do not want to see their reflections. वो अपने reflections को एक दूसरे की आंखों में देख नहीं सकते. तो स्टाइलिश recreates the passion of dancing she lived for and with her young lover Peter, कि जैसे वो करती है. तो symbolically she sees her close friend Olga now having taken her role and clumsily कि वो अपनी जो है वो ओल्गा को देखती है, taken her role and clumsily to Sally making missteps in life, कि वो जिंदगी के अंदर जो missteps कर रही है, pressing her great fat chest against him, puffing and blowing in his face, not content with the way earthly life is going on without her. Stanley wishes she could dance, dance, dance. How I would love to go down to earth for just a moment and dance with him again. You know, so सब दोबारा dance कर सकते हैं. As the dancing symbolizes her connection to earth existence, the fading music symbolizes her renunciation of all prayers, since she will have to negotiate a new existence entirely. उसको एक बिल्कुल नई existence के साथ जो है वो जाना होगा. As she can't hear a sound, वो कोई sound नहीं सुन सकती. All over, it's the end. The earth has left me. ये almost इख्तिताम है. The earth has left me. Of the three characters, Estelle was the most, you can say, connected to sensual life. Estelle जो थी वो ज्यादा connected नजर आती है sensual life के साथ on earth, and committed the most brutal betrayal, और वो most brutal betrayal के साथ है in murdering her own newborn child, कि वो किस तरह से वो अपने newborn child को मतलब वो खुद murder करती है. Dance music as light and graceful contrast most effectively
with the eternal silence, yet noise of our entrapment with Garson and Lees. लेकिन इसके साथ जो है वो क्या नजर आती है, yet noise of our entrapment with Garson and Lees, कि कैसे मतलब जो है वो इंट्रैप हो जाती है गार्सन एंड एनीस के साथ, कि वो मतलब जो वो एनीस से नफरत करती है लेकिन गार्सन की तरफ माइल है, लेकिन वो इन दोनों के साथ अब उसको सरवाइव करना है और लाइफ फॉर इटर्निटी के लिए सरवाइव करना है जी। Early in the play, when the heat of the room becomes oppressive, Gershon starts to remove his jacket. No details are given about it, other than its 12 bullet holes, but it represents the previous formality of his existence, जी the need to dress for others and play a role, and the reason for his death. हाँ, He was shot for cowardice by firing squad, even if Gershon is passive and influential. Until late in the play, he had his profession and his self image. जी He realizes in letting down his guard with the two women and removing his jacket. ठीक He could be signaling something he doesn't wish to. In हाँ, some literary situations, a scene with a man and two women might indicate influential sexual इवेंचुअल सेक्सुअल relationship. रिलेशनशिप के एक बंदे का मतलब एक बंदे का दो वुमन के साथ जो है वो सेक्सुअल रिलेशनशिप को जाहिर करता है, बट सार्टर हैज एवरीथिंग बट सेक्स इन माइंड फॉर हिज स्टोरी। तो द थ्री आर इन ट्रायंगुलर ट्रैप मेकिंग पासेस एट अनदर कैरेक्टर, कि वो एक दूसरे के ऊपर जुमले कसते हैं फ्रॉम द यू कैन से desperation then desire, however each attempt will fail because someone else is watching and daring, कोई और देखता है and daring, you can say exerting a false and judging self between the bodies and any possible coupling. So the traditional sense of flirting is, we can say, dampened by the presence of a third who has rejected another, कि जो तीसरे को मतलब जो है वो जो है वो रिजेक्ट कर चुका है and will be rejected in turn. When Garson asks, "Do you mind it?" क्या आप माइंड करते हैं, and begin to you can say remove his outer shell, Estelle reverts to her social self. How dare you? I loathe men in their shirt sleeves, कि मैं मतलब जो है वो मर्दों को उनके shirt sleeves में मुझे नफरत होती है. The social and sexual symbol of the jacket covering the male body is important to her, but Anise openly says, "Oh, I don't care much for men anyway." मुझे उनकी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि वो lesbian है इस वजह से उसको कोई परवाह नहीं है. So the words any and way are separated for a purpose to you can say situate are figuratively between Garson and Stella, where she will remain for the entire play. As the temperature rises, Garson will eventually remove his jacket, but no one will care because then all desire will have been made clear, as will the dead end of trap of human nature when it falsely defines others. No jackets are needed after all, कि कोई jackets की मतलब जो है वो जरूरत नहीं. In East Alien, guards are also symbolic. Through them, Sartre is showing the condition of society in which he lives. कि उस वक्त क्या सूरत हाल. People have locked themselves into a closed room with no windows to see out into the other ways of life. German थे वहाँ पे, satisfied with their meaningless existence. They feel no need to better themselves for society. They have closed their minds, कि अपना जहन बंद कर चुके हैं to anything fresh or new. Even when the door to hell swings open, they are unwilling to go out. They choose their own hell. उन्होंने अपनी hell जो थी वो choose कर ली थी. So more or less ये वो concept है जो इसके साथ associated था, और इस तरह से हमारा जो प्ले था नो एग्जिट वो अपने इख्तिताम को पहुंचा अपने तमाम मतलब टॉपिक्स और आई कैन से एक्सप्लेनेशन के